Yes. In CBSE sample paper standard mathematics question number 23 is tan alpha plus cot alpha is equal to 2, and you have to find out the value of tan square 20 10 raised to power 20 alpha plus 4 raised to power 20 alpha. You have to find out the value of this. Okay. Any idea from this class to solve it? Any idea? Yes. So first of all, we will change cot alpha into 1 upon tan alpha. Then we will take tan alpha as LCM, and the numerator we will write tan Okay. square Yes, sit alpha down. plus 1 upon tan. Yes. In tan alpha, it is cot alpha. We will convert into the same into the tan. And as you know that the relation between cot alpha and tan alpha is 1 by tan alpha. Cot alpha is equal to 1 by tan alpha. Okay. Now change it. This tan alpha plus 1 by tan alpha is equal to 2. LCM is tan alpha. Yes. It becomes tan square alpha plus 1 is equal to 2. It becomes a quadratic equation. Okay. Now tan square alpha plus 1 is equal to twice of tan alpha. Tan square alpha minus 2 tan alpha plus 1 equal to 0 is equal to 0. Okay. Now make two factor such that multiplication of two factor will be 1 and the addition will be minus 2 tan alpha. Tan alpha and tan alpha. Tan square alpha minus tan alpha plus 1 equal to 0. Am I right or wrong? Right. Any doubt, any problems? Online student? Okay, yes. What is common in first two terms? Tan alpha. Tan alpha is common. Yes, tan alpha minus 1 is common. Tan alpha minus 1. Tan alpha minus 1, that is equal to 0. Okay. Now it becomes tan alpha minus 1. Then it becomes tan alpha minus 1 equal to 0. Yes, sir. Now tan alpha minus 1 is equal to 0. Tan alpha minus 1 equal to 0 and tan alpha minus 1 equal to 0. So tan alpha is equal to 1 And and tan alpha is equal to tan of 45 degrees. Alpha is equal to 45 degrees. Okay. Here alpha is equal to 45 degree. Now we will put the angle as 45 degree in tan square, tan raised to power 20 alpha and cot raised to power 20 alpha. Yes, tan raised to power angle is your 45. Yes. Angle is your 45. Okay. Angle is 45. Same cot raised to power 20 alpha angle is 45. And as you know that tan 45 is 1 and cot 45 is also 1. So 1 raised to power 20 and 1 raised to power 20, it becomes 1 plus 1, that is your answer. Okay. Any problem? Any problems? Salman Asmi ko?
Now question number 24. Have you done? If 217x plus 131y is equal to 930 and 131x plus 217 y equals to 827. is equal to 827. Okay, you have to find out the value of x plus y. Yes. Any idea in the class? Yes, sir. Yes. Many answers. Listen to me. Your diagonals are equals. 217x and 217y. That is 131y and 131x. What step will you use to solve this question? Add and subtract. So first of all, you can Yes. add them and Equation first and equation second. Okay. Yes. Adding equation first and second we get. From equation first and Adding equation first and second we get first plus second. 348x. 348x plus 348y. ये कंसेप्ट क्या है तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे डायगोनल इक्वल होंगे. ठीक है, जब यहाँ पे से मान लो 217 यहाँ पे 217 यहाँ पे 131 यहाँ पे 131 यहाँ पे सेम है तभी ये क्या है प्रोसीजर है. अदरवाइज सभी क्वेश्चन में प्रोसीजर नहीं है ये. आप समझ रहे हो कि इन ऑल द क्वेश्चन दिस प्रोसीजर विल बी एप्लीकेबल नहीं. ठीक है, देयर आर 3 मेथड but in this year there are 2 methods. Cross multiplication. This is reduce cross multiplication reduced by CBSE this year. And substitution elimination. methods. Okay. I have Yes. done with L. Now this will becomes 740. 1740. 1740. Okay. Yes. Now Common. 348 common x plus y is equal to 1740. 3 5s are sir. Okay. 5. X plus y is equal to 5. That is equation third. Yes. So ये कुछ my question है. Yeah. बस x plus y पूछा है. X plus y is equal to 5. It is. Your answer becomes. Okay. It is final. ये तो सर ऐसे भी निकल सकते हैं x की वैल्यू अलग से निकाल के y की अलग से उन दोनों को ऐड कर दे. हाँ तभी हो सकता है. तभी पॉसिबल है. यहाँ पे आंसर आपका डायरेक्ट आ चुका है. ओके. ठीक है, ये ऐसे के लिए या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. Put the value of x and put the value of y. ओके. अभी तो सोल्व करना चाहे कैसे करेंगे? नेक्स्ट आगे देखिए. किताब के ऐसे आंसर आ गया. Equation Subtracting equation first and 2. first and second. Okay. Do it. minus y equal 1. X minus y equal 217x plus 1. 1 3 1. 131y is equal to 913 sir. 913. Sir 913. yes. Next is 913 1 3. yes. Next is 131x 131x plus 270y is equal to 827. 827. Subtract. Sign will be changed. हाँ. Minus
y equals to 86. 86. Okay. yes sir. Now 86 is common. Common. X minus y is equal to 1. X minus y is equal to 1. Equation 4. Yes. Adding equation third X and plus fourth. y is equal to 5 X minus y equals to and x minus y is equal to 1. 1. 2x is equal to 6. 2x equal 2x is equal to 6. X is equal to X is 3. equal to 3. Y is equal to 2. Okay. And put the x value of x in equation this. That is 3 plus y is equal to 5 and y is equal to 5 minus 3. Y is equal to 2. Okay. And value of x is 3 and value of y is 2. X plus y is equal to 5. So 3 plus 2 is equal to 5. आपको क्या है वहाँ पे अगर चेंज करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो. Okay. You can do such as. अगर पूछे सर पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेपरेटली वो चेंज भी कर सकता है वहाँ. अगर 3x plus 2y कर दे तो फिर क्या करते हैं? तब तो ये मेथड लगाएंगे. अगर यहाँ पे x plus y नहीं हो करके अगर यहाँ पे होता 3x plus 2y तब भी आसान होता. फिर क्या करते? पहले वैल्यू सॉल्व करते फिर वो है डबल. ना? Okay. Next is your. Have you done? Have you done? Question number 24. 25. This 25. was Okay. Question number 25. A card is drawn from a well spread deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? It's Yes. Stand up. Divyansu Singh, stand up. A card is drawn from a well spread deck of cards. Okay. 52 playing cards are there. Please don't tell me answer. Okay. Yes. But the probability that the card drawn is neither a king nor a queen. उसमें क्या है ना तो king होना चाहिए ना ही queen होना चाहिए उसमें. Yes. Neither king. उसमें king जो हमारे पास कितने हैं? 3 by 13. Queen कितने हैं? 4 है. हाँ. ये इस playing cards में नहीं होनी चाहिए. 11. तो probability क्या होगी इसकी? 52 minus 4 plus 4 divided by 50. Sir, plus 4 by what? हाँ. That is So 44 upon 2 11 upon 13. Yes, sir. 4 11s are 11 by 13. 13s are. सर ये क्वेश्चन से जल्दी स्किप हो गया. क्या हो गया? 25 वाला क्वेश्चन से स्किप हो गया. 25 skip हो गया. मतलब ये 2 अच्छा 25 कर 26 कर दिया. हाँ. 26 questions. Okay. Question number 26. ये पेपर दिखा दो. It is question number 26 है. Okay. चलो. Question number 25. LCM of two prime number P and Q. LCM of two prime number P and Q is 221. P is greater than Q. And LCM of two prime numbers. Two prime numbers. Find the value of 3P minus Q. P is greater than Q. P is greater than Q. And LCM is 221. ओके. अब ये प्राइम फैक्टर कीजिए क्योंकि प्राइम नंबर है
जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या देखिए आप 221 प्लीज टेल मी 13 से करेंगे 13 and 17. 17 13 and 17 are two prime factor and p is greater than q. So P is 17. P is 17 and q is 13. Okay, now we have to find out the value of 3p minus 2. 3p minus 2. Yes, 17 and the value of q is 13. 51 minus 13. Solid 38. Okay. अच्छा सर ये 13 और 17 कैसे हो? प्राइम नंबर दे प्राइम फैक्टर करेंगे ना हाँ। इसके तो इतने लार्ज में जाएगा इसका प्राइम क्या कर सकते हैं सर पता कैसे चलेगा उसका? प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे उसके करना पड़ेगा। बिना करे नहीं करते। कैसे होगा when two dice are thrown simultaneously then number of possible outcome will be 1 2 3 36 and 4 5 6 6 raised to 1 2 3 4 5 6 okay 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 okay 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 okay next is your 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 6 3 5 4 1 4 3 2 6 3 4 4 4 5 4 1 सर आप 4 4 तक 2 अप्लाई कर लीजिए 4 3 4 4 4 5 4 6 जितने टाइम बच्चों वाला ये तो बच्चों वाला है ये बच्चों वाला होता है ना तुम्हें आ जाए समझाओ कैसे मिला इसके 36 outcomes are there 6 raised to power 2 yes next is your 6 1 now 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 next is your 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 okay at least 5 means कम से कम क्या है 1 times 5 है उससे अधिक टाइम्स भी 5 आ सकता है ठीक है यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है 1 5 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 में एक से अधिक भी आ सकता है ये आएगा 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे है आपके पास 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे हाउ मेनी 11 समझ में आया 11 कैसे ये है लिखना पड़ेगा सर नहीं सो एग्जाम में लिखेंगे ना वो आपकी मर्जी क्या करना क्या नहीं करना सोल्व आप नहीं करना है सर मैं अगर इस फॉर्मूला में लगाऊंगी तब तो आउटकम्स नहीं पता इसको चलेगा कोई बात नहीं इसमें तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता चलेगा हाँ तो 11 के लिए सब लिखना करना पड़ेगा पड़ेगा ये एमसीक्यू क्या है सर याद हो तो हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो सब बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 28 1 plus sin square alpha is equal to 3. Now you have to find out the value of cot alpha. Any idea in the class? यस सर बताइए. यस सर So first of all we will write sir one को हम लोग पहले लिखेंगे sin square theta plus cos square theta then sir function incomplete आपने लिखा है यस सर 3 sin theta cos theta 3 sin alpha cos alpha. 3 sin alpha cos alpha. so we will Yes. change sir we will change 1 to sin square alpha plus cos square alpha then we will write Okay, yes. We will replace the 1 with sin square alpha plus cos square alpha. यस Sin square alpha plus cos square alpha and then plus sin cos square upon alpha sin will be cot is equal to 3 sin alpha cos cos alpha. Okay?
Yes. Now it becomes 2 sin square alpha. 2 sin square alpha cos square alpha. plus cos square alpha So we make that minus 3 sin minus 3 sin minus 3 sin alpha